If suppose you meet a dog, right, randomly, what is the first thing that should come to your mind and which comes to your mind? That is, either the dog is highly barking at you and you are running at your full speed to save your life. Number two, you are actually scared of dog because during your history the dog has done something bad with you. And number three, this is number one, this is number two condition, and this is number three condition. Number three is you can and the dog can be a very good friend. Anything is possible. Now suppose you have a very bad history with dog. What is the probability that all dogs are same? None. The dog that bite you when you were young, the same dog might not be out here, right? The dog you are observing, this one might not be the dog which might bark you or might thrive you around. It might be a good friend to you. There is some probability, right? Same thing with trading as well. Trading is a game of probability. We cannot say that any trade we took under all particular circumstances went our way. That doesn't mean all other trades will go our way or any particular investing will go our way. It's a game of probability. We have to understand that, right? Life is a game of probability. Without this, it is impossible. People generally think that whenever we see a dog, the dog will start barking at us and that's why we get scared. That's not true, actually. We have to understand all dogs are not same. Similarly, all patterns, all charts are just not same. Let us understand what I'm trying to say. Whenever we observe, there are two kinds of actually methods to understand it, right? Number one is called fundamental analysis. Number two is called technical analysis. Fundamental analysis is something we know. How does fundamental analysis works? And technical analysis is something also we know. How does it work? This works on price. This works on data, company data, right? Internal data. The difference is both works on probability. Both works on probability. There is nothing in this world that works 100% certainty. कि भाई ये करूँगा तो ये जॉब मिल ही जाएगा, ये करूँगा तो ये जॉब मिल ही जाएगा. In life there is nothing like that, right? So one thing is only certain in life and that is death. Hopefully that is not the topic of our class. We will be discussing about the name word of probability. What is the basic meaning of probability? Probability means basically in trading, which is very much useful thing, that anything can happen. Our target is to define our edge, our classified positions, and anything can happen. Why I am talking so much about probability? Now the next question, this is what the question you might be asking yourself. Why is this particular man talking too much about probability? Because, see, we will be discussing today the behavior of price. Right? This is the topic that we will be discussing today. The behavior of price. Now what is the behavior of price that we will be discussing? Basically, whenever we see a price chart, this you can see an ITC equity chart. The price chart is moving. The price chart is moving. अब आप मुझसे पूछोगे कि भाई ये टाइप का चार्ट देखने का तो आदत है नहीं. हम लोग को तो ये कैंडल वाला देखने का आदत है. ये जो कैंडल होता है, जो ग्रीन कलर का होता है कोई, ठीक है, कोई रेड कलर का होता है, ये सब देखने का आदत है. ये सब चार्ट्स क्या है? So I would like to tell you in that particular aspect that there are multiple lines we can form the candles. These are the variety of candles. We have a tendency of observing only one particular price value ratio. प्राइस का जो भी बिहेवियर होता है, कलेक्टिव डेटा जो भी हिस्ट्री में प्राइस कैसे बिहेव किया है, मतलब यहाँ पर इफ यू सी आउट हियर, प्राइस हैज़ मूव्ड फ्रॉम समथिंग अराउंड 420 rupees, it has moved up to 492 rupees, again it came down to 440 rupees और नीचे गया. So this is the movement of price and this is the historic data. मतलब ये पहले हो चुका है. We can see that this particular thing, this movement is known as the line movement, right? मतलब if we have the line movement, this is how the graph will show us. If we have the Henskei movement, Henskei-Ashi movement, the lines will be different. If we have the Renko movement, the lines will be different. So every particular trader has a different movement of the SEMs. ठीक है, तो हर कोई ट्रेडर अपना अपना मूवमेंट के हिसाब से मूव करता है. इट डजंट मीन्स कि एवरीवन मूव्स ऑन द सेम पर्टिकुलर मूवमेंट, राइट? If you and I are moving in candlestick, doesn't mean all the trader have to move with candlestick. We generally use candlestick because we read candlestick majorly. कोई भी ट्रेडर का यूट्यूब चैनल देख लेते हैं तो they use candlestick, right? We use candlestick. Whenever you see a price chart, we use candlestick. Whenever we move to any particular trading system and we open our browser, open our brokerage account, we see candlestick. That is the reason we observe via candlesticks. But candlestick is just not the option, just not the only option. We have multiple options. Japanese basically have discovered this factor.
Now I would like to move on, because in Japan they just don't use candlestick. There are multiple methods, right? They use all the following methods, and it depends upon you as well as a trader which method you want to use, which method is suitable for you. So we'll be going through them in history, and basically we'll be moving on with the common topics today, that is known as the candlestick pattern. And before that, I would like to move you on with the history of candlestick. Let us see why candlestick and how did it came. Okay, so if we move to the history section, the Japanese began using technical analysis to trade rice in the 17th century. So they used to sell rice, basically they used to sell rice in the 17th century using technical analysis. कि इतना में प्राइस ओपन हुआ, हाई इतना में गया, नीचे इतना में आया. See, this is the red. So that is how the candlestick formation came in. And the person who actually invented, see, they used to do technical analysis. Japanese used to do technical analysis. And technical analysis को, let me tell you, ये technical analysis को candlestick में exactly convert करने का जो इसका नाम था, that is known as Munisha Homa. Right, this person is known as Munisha Homa. Back in 18th century, he discovered a process called Japanese candlesticks. So the thing we say candlestick, it's just not candlestick, it's called Japanese candlestick, because this method was discovered in Japan actually. Correct. Now what is candlestick? How does it work? We'll be coming through them individually. Okay, now let's see. What are candlestick? How does it work? These are candlestick patterns. Why do we say candlestick patterns? Candle तो मतलब समझ में आया. अब उसका pattern का मतलब क्या है? That is also will be understanding, right? Now let's see. There are two particular basic kinds of candlesticks: the green candlestick and a red candlestick. Or how does it comes in? Let me tell you. Let us take an example. Suppose we have an ITC share. ITC शेयर का आज स्टॉक मार्केट में 9:15 बज गया, तो वहाँ पर मार्केट ओपन हुआ. तो मार्केट ओपन समथिंग अराउंड, लेट्स से मार्केट ओपन समथिंग अराउंड 430. ठीक है, अब खुल के वो नीचे गया थोड़ा, इट वेंट डाउन. दिस इज द ओपनिंग फेज, दिस इज द ओपनिंग फेज. तो आफ्टर इट गॉट ओपन इट वेंट डाउन लो, सपोज इट वेंट ऑन टू 428 और समथिंग लाइक दैट. एंड देन यहाँ पर से बायर्स भारी हो गया, द डिमांड वेंट अप and the market price went up again. हाई होते होते सपोज इट वेंट समथिंग अराउंड 444 चला गया. आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, राइट. बट एट द टाइम ऑफ 3:30, मतलब 3:30 को जब मार्केट खत्म होने वाला था, इट कुडंट सस्टेन देयर, मतलब सेलर्स लोग हायर हैवी हो गया. इट एंडेड जस्ट आउट हियर, क्लोज हो गया. इट एंडेड समथिंग अराउंड एट 440 रुपीज़. नाउ the market opened out here, closed out here. This is the position in which candlestick is formed. This is the formation of candlestick, and this is a green candlestick. मतलब इस पूरे दिन पे who was heavier? The buyers were heavy. Correct. यहाँ पर buyers heavy थे. मतलब the demand was too much. Since the demand was too much, the market, the particular stock had shown greenish. This greenish formation is shown by this particular stock. This is known as the bullish candlestick. इसको कौन सा candlestick बुलाते हैं? Bullish. समझ में आया? Open कहाँ पर होता है? End कहाँ पर होता है? This is the high, यहाँ पर जाता है. That doesn't mean it will end out here. So you have to understand this thing. The phase, always bullish candlestick opens at bottom, closes at the top, right? And ये जो high वाला होता है ना, this is known as the shadow of a candlestick. क्या बोला जाता है? This is known as shadow of a candlestick. This is also known as shadow of a candlestick, right? और ये जो बीच का होता है ना सॉलिड ग्रीन, दैट इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ अ कैंडलस्टिक, राइट. दैट रिप्रेजेंट्स कि नीचे खुला था, कितने में खुला था? 430 में खुला था. बंद कितने में हुआ? 440 में. मतलब द पर्टिकुलर स्टॉक गेन्ड इट्स प्राइस, मतलब कुछ गेन किया एक दिन में. मीन्स इट डिडंट वेंट अंडर लॉस, इट गेन्ड सर्टन प्राइस. दैट्स अ गुड थिंग फॉर द स्टॉक, राइट, इफ यू आर अ बुलिश व्यूअर. तो ये बुलिश इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब योर प्राइस इज गोइंग अप. समझ में आ रहा है उतना? ओके. Now let us move to next part, something called the decreasing bearish candlestick. What is bearish candlestick? Suppose a stock price is there of ITC. Let us take example, same company, ITC. Suppose ITC opens at 440. I'll take at same price. Okay. Next day ITC opens at 440. 440 में खुला, ऊपर गया ITC. Suppose it went on to 444, right? And it couldn't sustain there. मतलब यहाँ पर sellers लोग ज़्यादा भारी हो गए. Who was more heavier? The sellers were more heavier. Once the sellers were heavier out here, what happened was
एज यू कैन सी द सेलर डोमिनेटेड द फील्ड, मतलब उन लोगों ने नीचे ठेल दिया प्राइस को, जैसे ठेल दिया इट वेंट डाउन 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 डाउन, यहाँ पर चला गया. सपोज इट वेंट टू 428. एक दिन में होता है ना कभी, देयर इज सम वोलाटिलिटी इन द स्टॉक. दिस इज द रीजन व्हाई वोलाटिलिटी कम्स इन जनरली. आफ्टर दिस देयर आर सम बायर्स जो जिसने ऊपर ठेला एंड द मार्केट क्लोज्ड आउट हियर. यहाँ पर खुला, यहाँ पर बंद हो गया, राइट. सपोज द स्टॉक क्लोज्ड अराउंड 430. मतलब दिस रेंज जहाँ से खुलता है वहाँ से रेंज स्टार्ट होता है जहाँ पर एंड होता है, राइट. दिस टाइम इट ओपनड एट अराउंड 9:15, इट क्लोज्ड एट अराउंड 3:30. So now the candle is red color क्योंकि प्राइस खुला ज़्यादा में था, बंद हुआ कम में. मतलब 440 में ओपन हुआ था, 430 में बंद हुआ, राइट. सो द प्राइस हैज डिक्रीज. दिस इज नोन एज बियर्डिश कैंडल पैटर्न. अगेन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द शैडो ऑफ अ कैंडल स्टिक. इसको क्या बोला था? शैडो, करेक्ट. दिस इज द शैडो. दिस इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ अ कैंडल स्टिक. क्लियर? दिस इज कॉल्ड द बॉडी. होप आई एम doing it okay. If you have still any problem, do let me know. Next, what are the types of candlestick? You can say that okay, we understood candlestick, usko candlestick open or low bosko bola jata hai. What are the categories of candlestick? This is the first type of candlestick known as the Marubozu candlestick pattern. Okay, now what is Marubozu candlestick pattern? There are two categories of Marubozu. Something called Marubozu bullish, Marubozu bearish. Bullish matlab again it has to open low, close high, राइट. एंड इफ इट हैज़ टू बी बियरिश, ओपन हाई क्लोज लो. सिंपल है ना. मतलब 440 में खुला और बंद हुआ सपोज 450 में, इट्स अ बुल. मतलब प्राइस ऊपर गया, सो इट्स बुलिश. एनीथिंग दैट्स मूविंग अप दैट्स बुलिश, एनीथिंग दैट्स मूविंग डाउन दैट्स बियरिश. इतना सिंपल आ रहा है ना. यस, सिंपल. दैट्स अ सिंपल प्रोसेस, राइट. अगेन इफ इट एनीथिंग ओपन्स एट 450 एंड क्लोजेस डाउन टू 440 दैट्स बियरिश. सो एनी पर्टिकुलर कैंडल विच इज रेड दैट इंडिकेट सच काइंड ऑफ थिंग्स. समझ में आया? ओके. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द फंक्शन. अगर ये दिस इज द कैंडलस्टिक वी आर ऑब्सेस्ड विथ, मतलब यही देख देख के हम लोग को आदत है. ओके, अगेन आई सेड दिस कैंडलस्टिक पैटर्न, आई विल टेल यू समथिंग. दिस इज अ डिक्रीजिंग ट्रेंड. एज यू कैन सी दिस इज अ डिक्रीजिंग ट्रेंड, मतलब ये नीचे जा रहा है. एंड नीचे जाते जाते इट इज फॉर्मिंग अ मारुबोजू, राइट, कैंडलस्टिक. द मारुबोजू कैंडलस्टिक मतलब सी यू कैन सी आउट हियर इट हैज ओपनड इन लो, ओपन छोटा में हुआ, क्लोज बंद में हुआ. मतलब इट इज सॉलिड फेस. दैट मीन्स द बायर्स आर हैवी आउट हियर. बायर्स आर हैवी मतलब देयर इज ह्यूज डिमांड, ह्यूज डिमांड मतलब अभी यहाँ से बाइंग स्टार्ट होगा. तो बाइंग स्टार्ट होगा दैट रिप्रेजेंट्स कि ये मार्केट ऊपर जाएगा. नाउ यू कैन से मी, यू कैन आस्क मी दिस क्वेश्चन दैट इज इट ऑलवेज पॉसिबल? आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी ऑफ द डॉग्स. इज इट ऑलवेज पॉसिबल दैट द डॉग विल बाइट you since you have bitten by a dog once in history? No, that's not possible, right? Same thing out here as well. It is not possible that you will get the same reversal again and again. It depends upon probability. Trading is all about probability, right? That's why we use entry level and stop loss. That is the reason why you use entry level and stop loss, because nothing is fixed in this particular phase. Next, what we have is black Marubozu. Right? What is black Marubozu? Black simply represents, they call it black, actually it's red. Right? Red Marubozu means the representing, the alternating. It represents the bearish term. मतलब यहाँ पर क्या है कि if you see, if you particularly just observe this thing, what you observe is, आपको क्या देखने को मिलेगा? This is a decreasing down trend. अब ये डाउन ट्रेंड में मारुबोजू फॉर्म हुआ, इसका मतलब ये ट्रेंड ऊपर जाएगा अभी. मतलब दैट इज द एंड ऑफ डाउन ट्रेंड एंड नाउ फ्रॉम हियर इट विल स्टार्ट एन अप ट्रेंड. क्या शुरू करेगा? अप ट्रेंड. सेम थिंग इफ यू जस्ट सी आउट हियर, सेम थिंग इफ यू सी आउट हियर. नाउ इफ यू कैन सी this is just an uptrend, right? This is just an uptrend. See, this is an uptrend, right? ये uptrend जाते जाते यहाँ पर ये stop हो गया, यहाँ पर और एक मारुबोजू फॉर्म हो गया. Suppose it is red or it is called black मारुबोजू. That means it is generating next a bearish trend. Again, it's a probability game. It depends upon everything. It depends upon volume, it depends upon analysis, it depends upon market character. उसके बाद मालूम चलता है कि नीचे जाएगा कि नहीं. Again, अगर सब if it was certain 100% कि नीचे जाने वाला है, no one would have used the factor of stop loss. So that's a point, right? Nothing is permanent. So that's why I gave you the story of dog. एक बार आपको कुत्ते ने काटा इसका मतलब नहीं कि बार बार काटेगा. That dog, next dog might be a good friend to you. You have to understand that all dogs are not same. Clear? That's the reason why I gave you that particular story. Okay. Hope you understand till here.
Next pattern of candlestick. What is the next pattern of candlestick? Let's see. The next pattern of candlestick is basically known as hammer. क्या बोला था? हैमर मतलब सी, इसका ओपन इतना में होता है, क्लोज इतना में होता है, इसका छोटा होता है. द हेड इज़ वेरी मच स्मॉल. बेसिकली हेड इज़ वेरी मच स्मॉल. हेड बहुत छोटा होता है इसका, राइट. दैट इज कॉल्ड दिस पर्टिकुलर कैंडल स्टिक. हेड इसका बहुत छोटा होता है, इसका शेडो बहुत लंबा होता है, हैमर बोला जाता है, राइट. यही हैमर को दूसरे भाषा में हैंगिंग मैन भी बोला जाता है. ना यू आर कन्फ्यूज्ड कि यही चीज़ को हैंगर बोला गया, यही चीज़ को हैंगिंग मैन कब बोले इसको. When should we call this thing a hammer and when should we call this thing a hanging man, right? Now let's see. I'll show you with the help of an example. Very easy, nothing. अभी ये थोड़ा बहुत इधर उधर लगेगा because you are new to it. Even trading takes practice. As I said, trading takes almost 3 to 5 years of your time because these are all the inputs that you have to put into your mind. And again, you have to understand the law of probability because investing and trading both are the game of probability. Nothing is sure, nothing is certain. In life only one thing is certain, that is death. Irrespective of that, nothing is. Okay, so hammer मतलब क्या, we have a decreasing downtrend, right. We have a downtrend, तो downtrend आया, यहाँ पर फॉर्म हो गया hammer फॉर्म हो गया. This hammer represents now the next trend will be up. Clear? Same thing hanging man. See, this is an uptrend. ये जा रहा है कहाँ पर, uptrend में. Now next we have an hanging man. This hanging man will represent that we are observing in a downtrend. This is the downtrend. मतलब ये ट्रेंड के कौन सा पोजीशन में, सपोज ये नीचे जा रहा है ट्रेंड, वहाँ पर आपको कोई हैंगिंग मैन दिख गया, मतलब यू कैन से दैट बायर्स आर गेटिंग हैवी आउट हियर, डिमांड बहुत बढ़ेगा, अब ये ऊपर जाएगा. सेम थिंग, अब ऊपर जा रहा है कोई, ऊपर आ रहा है कोई भी ट्रेंड, यू आर ऑब्जर्विंग अ रेड कलर हैंगिंग मैन, राइट, एंड इट गोज डाउन. द कलर कैन बी चेंज्ड. यहाँ पर कोई भी चीज़ इट कैन फॉर्म डिफरेंटली, रेड एज वेल, या इट कैन फॉर्म ग्रीन एज वेल, द फैक्टर्स विल बी सेम, राइट. यू शुड अंडरस्टैंड दैट हैमर कैन बी बोथ वे एंड हैंगिंग मैन ऑल्सो कैन बी बोथ कलर्स. मतलब यहाँ पर रेड भी हो सकते हैं, मीनिंग सेम है. यू हैव टू सी वेदर इट्स अ हैमर और नॉट. इफ इट्स अ हैमर, ऑब्जर्व द ट्रेंड. दैट्स वाई एज आई से कि इन ट्रेडिंग इट विल टेक सर्टन टाइम. दैट्स वाई पेपर ट्रेडिंग इज मस्ट व्हेनेवर यू स्टार्ट ट्रेडिंग, राइट. ओके, नेक्स्ट, the thing that you have to understand is the difference between hammer and an inverted hammer. Now don't get confused, these are not tough, उतना भी मुश्किल होता नहीं है. okay, these are not that tough, easy, pretty easy. see, hammer और inverted hammer का difference let us see. hammer मतलब हम लोग को मालूम चला, hammer ऊपर डालता है. inverted hammer मतलब ये उल्टा होता है. okay, same thing, ओपन यहाँ पर, दिस इज द इन्वर्टेड हैमर, इसका भी बॉडी स्लो होता है. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर? हैमर इज केप्ट अपसाइड and inverted hammer is kept downside. Simple. Okay, what is the function of inverted hammer? Inverted hammer का function क्या होता है यहाँ पर, let us see. We have a decreasing downtrend, right, downtrend. ये downtrend में अगर hammer form हो गया, inverted hammer form हो गया, then it represents that it is moving upward. Clear? Yes. So this is the thing you have to observe in patterns again and again. Again, this thing is not sure, it comes with probability. Hope I am clear? Okay, every single thing in trading or investing comes with probability. Nothing is sure. No one can give you guaranteed results of this particular thing. कोई भी आपको बोले कि मैं 100% returns ला दूंगा, it's giving bullshit. You should understand that, and you are smart enough to understand that. Now see, same thing that comes out your inverted hammer. It's a decreasing downtrend. यहाँ पर hammer form हो गया, inverted hammer, it moves up, right? It gives a down. It changes the reversal. ये why are this candlestick pattern important? Because this trend gives the reversal. ये लोग reversal देता है. रिवर्सल मतलब एक ट्रेंड को खत्म कर दिया, मतलब डाउन ट्रेंड आ रहा था, डाउन को खत्म कर दिया, नाउ इट विल स्टार्ट द अप ट्रेंड. दैट्स द बेसिक फॉर्मेशन. क्लियर यहाँ तक? ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पर्टिकुलर थिंग, एंड दैट इज द लास्ट थिंग. सो आई वुड लाइक टू से बिफोर स्टार्टिंग दिस दैट there are infinite numbers of candlesticks. I cannot cover everyone, right? But yes, definitely I'll show you this. Why I'm showing you these patterns? Because these are very much important. These are the fundamental, these are the basic foundations of candlestick. If you want to trade with candlestick, these are the main thing that you should be focusing on. Without these particular basics, you can't proceed further. If you know all these basics, you will definitely know how to proceed further. मतलब दूसरा candlesticks भी you will able to learn, right? And the patterns, which we will be learning in next class, that is the volume analysis. Stay tuned for that. Now see, this is the shooting star, this particular candlestick.
right? Inverted hammer and shooting star. Inverted hammer, what we have understood, any particular inverted hammer that comes in, it starts the bullish trend, correct? Shooting star means, what is the meaning of shooting star? Shooting star means, suppose we have an uptrend, right? This is an uptrend. अब ये अप ट्रेंड यहाँ पर आके एंड हो जाता है. इफ यू सी अ शूटिंग स्टार, दिस शूटिंग स्टार जनरेट्स अ डाउन ट्रेंड. सेम थिंग, clear? This shooting star starts a downtrend. This is the formation and the entire next thing which we will be observing in volume analysis. If you have any question till here, please do let me know. Thank you.